Okay. So today basically we are discussing about all these contents. Basically we are focusing on coal dust explosion. Okay, so these are the contents like introduction, how coal dust explosion is occur and why this is occur in underground coal mines. Definition of coal dust explosion. What are the different ignition sources that is available in underground coal mines, and what are the histories of explosion that is occurred in mines within the last 120 years, uh, in 20th century and early 21st centuries. Okay, so next is factor influencing that coal dust explosion. What are the different factors that affect the coal dust explosion, their severity and their limit of explosivity here. So explosion testing apparatus, there is different apparatus that are the explosion has been tested to their limit and severity. Then characteristics of coal dust explosion. What are the different characteristics that influence the severity and its limit of coal dust explosion? Okay, so uh, last is prevention and suppression of coal dust explosion in underground coal mines. So let us start. These are the introduction. As we know, India is one of the second largest coal producer and consumer countries in the world. मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस होता है और उतना कंज्यूम भी होता है, ठीक है. Then all we know, coal mining is one of the most hazardous profession due to prevalence of various hazards like fire, explosion, health hazard, and other accidents, roof fall. All those things is occurred in underground coal mines. The coal dust produced during coal mining operation is regarded as most harmful material from the viewpoint of occupational health and safety of the miners. We know coal dust from the coal dust there is many health hazards like cyanosis and coal dust explosion. And fine coal dust is more dangerous due to prevalence of these hazards. Okay, so in the last few decades, we are seen a lot of accident is occurred in India and as well as the whole world, especially China and other countries, which attracted much attention in uh, safety of mines due to the loss of many miners' lives and mine properties also, especially explosion. A lot of miners working in underground coal mines are injured or dead, and numerous mine property that is burned out. Okay, so we know major coal producing countries across the globes are China, which is one of first largest coal producing country. Second is India, and other is USA, Germany, Australia. These are the major coal producing country, and these all uh, countries have witnessed some major explosion disasters where a lot of mine properties and other uh, miners' lives have been lost. Now there is our this day by day increasing, and to meet this production demand, there is mechanization level is increasing day by day, and due to this that mechanization level, the coal dust produced in underground mines, the size of coal dust that is produced in underground mines is significantly reduced day by day because of different coal cutting machine, continuous mine, long wall faces searer. These all machine
are continuously work and produce a lot of fine dust that enhance the problem of coal dust explosion and human health hazards. Okay. And we also know coal dust explosion in underground mines have many detrimental impact on the society and company as well. Like production, when any accident happened in underground mine, the production will be lost, or sometimes mine will be closed also. Increase in the cost of compensation. We have to give compensation where people are injured, or are they those who have lost their lives. Okay, insurance cost, training cost, loss of goodwill, and life of employee morals also. Okay, sometimes people are losing their single breadwinner due to the this all these accidents, and hence uh, a lot of research is going on in some research institute over the countries to prevent and suppression of coal dust explosion in underground coal mines. This is the major problem because a lot of as we already discussed, a lot of mine properties and other uh, mine property as well as loss of miners lives that is lost due to this explosion accidents, this because these are very severe, and sometimes it come out from the mine mouth also throughout the traveling all over the mine, and that is come out from the explosion flame is come out from the mine mouth. Okay, so basically what is explosion now? Sudden dust explosion is sudden combustion process of great intensity characterized by mechanical destructive effect through tremendous pressure and heat generate. Okay. Explosion, like either that is coal dust explosion or methane dust explosion. Both are sudden combustion process. When the methane gases are coal dust cloud are has ignited by a sufficient source of energy that is sudden exploded, characterized by mechanical destructive effect through tremendous pressure and heat generation. Okay, so okay, I think you understood. Okay, so as we all know, for occurrence of mine fire in underground coal mines, three basic thing is required, like oxygen source, fuel. Fuel means we can say coal dust, methane gas, or other thing. This comes in the fuel, and one is ignition source. This causes fire is occurred in underground mines and any place. For occurrence of fire, these three things is required. This is known as fire triangle. Okay, but explosion required two more things. One is dispersion and confinement. For fire, these three things are found in any condition. Fire will occur, but explosion, these two more things are required. Okay, first is dispersion, second is confinement. So, what is dispersion? So, for occurrence of explosion, two things dispersion. Okay, so dispersion is like coal dust or methane gas or other fuel has to be dispersed in air. Like सपोज जैसे कोल डस्ट है और या मिथेन गैस है, शुड बी डिस्पर्स्ड, मतलब एयर में वो डिस्पर्स्ड रहे, दैट इज सेटल्ड, यदि वो सेटल्ड फॉर्म में है, ठीक है. माइन गैसेस दैट इज ऑलरेडी डिस्पर्स्ड, स्पेशली मिथेन गैस दैट इज ऑलरेडी डिस्पर्स्ड एंड accumulated near the floor. Okay, and dust should be dispersed in air
due to some event or like airflow that is dispersed, मतलब एयरबोर्न कंडीशन में रहना चाहिए जो डस्ट है, वो एक रिक्वायरमेंट है. सेकंड इज कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट जो कोल डस्ट है या फिर जो मीथेन गैस है, जो एक्सप्लोजन के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट इज इन कन्फाइंड एरिया. मतलब एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में यदि डस्ट का कंसंट्रेशन बहुत हो, कन्फाइंड एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और दैट इज सस्पेंडेड इन एयर ऑल्सो, that is known as dispersion. So all this condition is when meet all this condition, then the explosion is occurred. And from this is known as fire triangle. And these things is as dispersion and confinement. This repetition is not required because nothing is there. So now we can start from here. As we already discussed in video, that time video is not visible. So as we know, the coal dust explosion, these are the definitions. Dust explosion is sudden combustion process of great intensity that is characterized by mechanical destructive effect through tremendous pressure and heat generation. So for mine fire and any places of fire, these three things are required: oxygen concentration, fuel. We can say like fuel, like in underground mine case, fuel is like coal dust, coal, or methane gas. And when that is ignited by some source of ignition, that fire is occurred. Okay, so for occurrence of explosion, two more thing is required, like dispersion and confinement. Okay, so what is dispersion? So the coal dust or methane gas need to be dispersed in air and airborne condition. Like methane gas is already that is deposited near roof due to their low specific gravity, and this should be confinement. Confinement means the concentration of coal dust or methane gas should be confined in a specific area. The concentration should be high in a specific area. And when all those things, all those four things, oxygen, fuel, dispersion and confinement, are ignited by some sufficient source of ignition, the explosion is occurred. Okay, so these fire triangle is max, explosion pentagon. So these two things are added and explosion pentagon is max. So basic requirement for mine explosion, as we already discussed, this is explosion pentagon. For coal dust or methane gas explosion, uh, combustible dust, oxygen concentration, ignition sources, dust confinement, dust dispersion, or when all these five things are meet at a particular point simultaneously, then explosion will occur. So this is the five basic requirement for occurrence of coal dust explosion. Okay, so these are the different elements that is required for coal dust explosion. Suppose when combustible dust, oxygen concentration, ignition sources is available, and dust dispersion and dust confinement is not available, no explosion is occurred. That is only mine fire is occurred. Okay, when combustible dust, dust dispersion, confinement is occur, oxygen in the ignition source is not available, no explosion is occurred. When these first four things is available, like combustible dust, oxygen, the confinement, dust dispersion also, and when dust is not sufficiently confined, only flash fire is occurred, the explosion will not occur. Okay, so suppose in this particular case ignition source is absent, then no, there is, if there is no ignition sources, no explosion will occur. And next is
in this particular case, oxygen is without oxygen, any combustion is not supported without oxygen. So here also explosion will not occur. Here dust dispersion is not available, then explosion will not occur. But here uh, fire may be occur. When these four things are completely occurred and the confinement of dust is not sufficiently but confinedly, but some partially it may be confined, then explosion may be propagate with some intensity. And when all these five things are occurred simultaneously, then high intensity coal dust explosion is occurred in underground mines or other allied industry where a lot of coal dust is handled. Okay, so 1 minute. Okay, so these are the mechanism of coal dust explosion. Suppose from here we can say, suppose this is development gallery or working phase where coal is extracted by either by continuous miner or any mechanized coal cutting machine or drilling blasting or any things that is happened. The this is a working phase. So coal dust generation source may be from drilling, blasting, loading और मैकेनाइज्ड कटिंग कोल, ये सभी सोर्स के कारण कोल डस्ट जो है प्रोड्यूस होता है वर्किंग फेज पे, या जहाँ पे ए लॉट ऑफ कोल हैंडल किया जाता है, कोल डस्ट हैंडल किया जाता है, वहाँ पे कोल डस्ट जनरेट होता है. और एज वी नो व्हेन कोल इज एक्सट्रैक्टेड सम the coal is some methane gas is adsorbed condition and absorbed condition. Some methane gas is emitted when coal is extracted, and that is accumulated near the roof due to this small specific gravity. So these are the methane gases. Okay, methane accumulated near the floor. And when any some disturbing event is occurred like airflow or other things, this generated coal dust is dispersed mean this is dispersed, that is coal dust is dispersed in air. Okay, so dispersed coal dust particle in methane air mixture. So this is the coal dust is dispersed in air in a coal in methane mixture. Some amount of methane is mixed in this coal. Sometimes this is mixture explosion. Sometimes coal dust is without methane. Coal dust is also able to propagate. Coal dust only is also able to propagate uh, mm, explosion without methane. Also, sometimes mixture is also available. So coal dust is basically getting airborne due to some event and dispersed in confined area. This is confinement means this is, suppose here we can see the coal dust is uh, dispersed in a confined area. Okay, we can see here confined area. And when this dispersed coal dust and methane air mixture is ignited by any source of ignition, like the coal dust cloud is ignited, like the source of ignition may be hot surfaces, direct heat or open fire, electrical spark, frictional spark,
self-heating, and luminous spark. These are the different ignition sources that is available in underground coal mines or other places where a lot of coal dust is handled. Especially underground mines, these all things are available. Okay, so here we can see when the that this dispersed coal dust is ignited by some sufficient source of ignition, the explosion will initiated. Okay, and explosion, when explosion is initiated, that is propagated in this particular direction, because this direction there is coal face is there. इसको मतलब जहाँ जिस डायरेक्शन में इनको जगह मिलता है, ये उस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है, ठीक है। तो these are the direction of flame propagation. We can see flame is propagated in this particular direction. Okay, this is, we can say, initial explosion, when explosion is initiated, and this is the direction of propagation. And all these things are coal dust dispersed in methane atmosphere. Okay, so when the explosion is propagation, that is headed by shock wave. Shock wave means basically when the explosion is occurred, when the explosion is occurred, that is headed by shock wave, means जो भी explosion जब होता है, तो उसके सामने में जितने भी एयर आते जाता है, उसको वो पुश करते हुए जाता है, दैट इज शॉक वेव। तो वो काफी तेजी से जो भी एयर उसके सामने में आता है, उसको तेजी से पुश करते जाता है, तो दैट इज हेडेड बाय शॉक वेव। एंड दैट शॉक वेव सम डिस्पर्स सम कोल, दैट इज शॉक वेव जब जाता है, तो उसको उसके पाथ में जो भी कोल डस्ट मिलता है, वो उसको फिर से डिस्पर्स करता है। ये है फ्लेम फ्रंट, तो वो उसको और उसमें ऐड होते जाता है, और ये फिर बाद में सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है। जैसे शॉक वेव, कोल हेड कोल इज हेडेड बाय शॉक वेव, और यहाँ पे ये वाला जो कोल डस्ट एक्यूमुलेटेड है कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको शॉक वेव क्या करेगा, एयर में डिस्पर्स कर देगा। और एयर में डिस्पर्स करेगा तो सोर्स ऑफ इग्निशन उसको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इग्निशन उसको यहाँ से मिलेगा, तो तब वो क्या होगा, सेकेंडरी एक्सप्लोजन होगा, और द एक्सप्लोजन विल बी मोर सीवियर एंड ट्रेवल थ्रू आउट द माइंस। तो ये कंटिन्यूअसली होते जाएगा, उसको जितना कोल डस्ट मिलेगा उतना ही उसमें फ्यूल ऐड होते जाएगा, और एक्सप्लोजन जो है और सीवियर होते जाएगा। ठीक है, तो these are the all mechanism of coal dust explosion in underground mine. I think you understood. Okay, so uh, proceed. Let me proceed further. If you have any doubt, or you ask some question, or you clearly understand the things, please reply by comment, so that I will go ahead or explain more the things. Okay. Okay. So these all are mechanism of coal dust explosion. Ignition sources in underground coal mines. As we already discussed, there is a lot of ignition sources available in underground coal mines, like open flame and direct heat, electrical and electrostatic spark, hard surfaces, frictional spark, self-heating, and other ignition sources. Some we can say one more is luminous spark is also.
one more is mm, okay, sorry, pen is here. Okay, luminous spark. ठीक है, luminous spark जो होता है, ओके वी कैन एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स. ओपन फ्लेम और डायरेक्ट हीट में क्या होता है, जैसे ओपन फ्लेम, जैसे ओपन फ्लेम हो गया अंडरग्राउंड माइंस में यदि अवेलेबल होता है. जैसे माइन वर्कर्स लोग समटाइम्स दे आर कैरी सम सिगरेट्स, मैच बॉक्स और अदर कुछ भी जो ओपन फ्लेम जो प्रोवाइड करे. ठीक है, तो वो ओपन फ्लेम या डायरेक्ट हीट होगा. जो कोई भी फ्यूल को हम लोग ओपन फ्लेम में डायरेक्ट हीट देते हैं, जैसे या तो नेक्ड लाइट यूज करते हैं, उससे भी डायरेक्ट हीट मिल सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर ओपन फ्लेम एंड डायरेक्ट हीट. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क. तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क में बहुत सारे इग्निशन सोर्सेस आते हैं. जैसे अंडरग्राउंड माइन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं. जैसे बहुत सारे केबल्स होते हैं, मोटर रहता है, उसमें से स्पार्क जनरेट हो सकता है. इसीलिए nowadays in underground mines intrinsically safe and flame-proof apparatus should be used so that the flame should be not come out from the instrument. Okay, so these are the electrical and electrostatic spark is some like sometimes the human body is also uh, uh, generate some electrostatic spark, and these are okay. So these are the electrical and electrostatic spark. Now hot surfaces means इसमें ओपन फ्लेम में आपका वेल्डिंग भी आ जाएगा. वेल्डिंग अंडरग्राउंड में इसमें वेल्डिंग हो रहा है या कटिंग कुछ हो रहा है, तो उसमें भी उसको ओपन फ्लेम मिल जाएगा, जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है. हॉट सरफेसेस में जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर बहुत सारे हॉट वर्क्स अंडरग्राउंड माइंस में जो हो रहे हैं, उसमें हार्ड सरफेस उसको जैसे मिल जाता है. जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के टॉप एकदम गर्म रहता है. ठीक है, तो उसको हॉट सरफेसेस से भी एक्सप्लोजन जो है इनिशिएट हो सकता है कहीं ना कहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल स्पार्क. फ्रिक्शनल स्पार्क मीन्स द स्पार्क जनरेटेड बिटवीन द फ्रिक्शन ऑफ द मटेरियल. जैसे दो मटेरियल के बीच का फ्रिक्शन के कारण जो स्पार्क होता है. जैसे कोई रनिंग ऑब्जेक्ट है और कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल द बेल्ट कन्वेयर इज रनिंग एंड द बेल्ट कन्वेयर इज उस किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहाँ से फ्रिक्शनल स्पार्क जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शनल स्पार्क. सेल्फ हीटिंग वी ऑल नो दैट इज स्पॉन्टेनियस हीटिंग वी कैन से. Spontaneous heating is we will discuss another class spontaneous heating in especially in mine fire. So spontaneous heating, due to spontaneous heating of coal itself, the coal dust may be ignited. So these are all the ignition sources that is available in the round coal mines. So let me discuss history of mine explosion. Okay. One more thing is one more thing we need to discuss here in ignition sources.
लास्ट इज ल्यूमिनस स्पार्क। ल्यूमिनस स्पार्क मीन्स जो हम लोग माइंड में इल्यूमिनेशन पर्पस से बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे लाइट हो गया, या स्पेशली पहले अभी तो बहुत सारे चीज़ हैं, कैप इलेक्ट्रिक लैंप है, या फिर जो पहले के टाइम पे हम लोग इल्यूमिनेशन पर्पस से यूज़ करते थे, फ्लैम सेफ्टी लैंप। सो दीज आर द अनदर source of ignition. A lot of this is, we can say, prominent ignition sources in underground mine, that is especially occurred in Indian coal mines. जैसे डिफेक्टिव फ्लैम सेफ्टी लैंप हो गया। डिफेक्टिव फ्लैम सेफ्टी लैंप से क्या है, यदि उसका जो स्पार्क है या फिर जो उसका फ्लेम है वो कोल डस्ट या फिर मीथेन गैस को इग्नाइट कर सकता है। बहुत सारे एक्सीडेंट इंडिया में ऐसे हुए हैं, ठीक है। So, okay, so all these ignition sources available in coal mines. History of explosion in India. Basically, in underground mines, there is three types of explosion is occurred. Mine explosion is occurred. Ignition of fire damp, ignition of coal dust, ignition of mixture of fire damp or coal dust. Basically, this class is okay. We are basically all over discussing about mine explosion, but this class is focused on coal dust explosion. Later, we will discuss on fire damp also. Or uh, the mechanism of explosion is more or less fire damp, and the coal dust explosion is more or less same, but few things is different. We will discuss later. So these are the three types of explosion: fire damp explosion, coal dust explosion, and mixture of fire damp and coal dust explosion. As we discussed in one figure, that is mechanism of coal dust explosion, that is mixture. We can say the uh, fire damp is also available in that particular places. So that is mixture of fire damp and coal dust explosion. So history of we are discussing about history of mine explosion in India. So from the all over the 20th century and early 19th century till date, we can say 1900 से अभी तक 39 major explosion is occurred in Indian coal mine. Okay, so 39 major explosion is occurred in Indian coal mine, and out of this 39, 7 were catastrophic. मतलब catastrophic means तबाही जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो 7 एक्सप्लोजन थे उसमें वो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर था, जिसमें इन 7 एक्सप्लोजन में 50 से ज़्यादा लोगों का डेथ हो गया, तो उसको बोल सकते हैं कैटास्ट्रोफिक। ओके, सो मोस्ट द मोस्ट डिजास्टर्स माइन एक्सप्लोजन टू डेट अकर्ड इन चाइना। मतलब अब तक का जो सबसे ज़्यादा सीवियर माइन एक्सप्लोजन हुआ है वो ये लिवनिंग प्रोविडेंस चाइना में 1942 में हुआ था। इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन में, दैट वाज कोल डस्ट एक्सप्लोजन, और इस एक्सप्लोजन में 1549 लोग डेथ का डेथ हो गया। तो इन द हिस्ट्री ऑफ माइन एक्सप्लोजन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, दैट इज द वर्स्ट एवर coal dust explosion that is occurred in the world. Okay, and in case of India, the deadliest explosion occurred in 1965 at धोरी कॉलरी। ठीक है, इसमें 268 लोग लोगों का डेथ हो गया था। दिस धोरी कॉलरी इज located in CCL, about 20 kilometer away from the Bokaro district, and that is located in Jharkhand. तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा
डेडलीस्ट एक्सप्लोजन जो हुआ है वो हुआ है चाइना में 1942 में, उसमें 1549 लोग मारे गए थे। और जो इंडिया में सबसे अ, खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ है हम लोग जो बोल सकते हैं, उसमें 268 लोग मारे गए थे, दैट इज अकर्ड इन धोरी कॉलरी। अभी धोरी कॉलरी दैट इज स्टिल वर्किंग, लेकिन जिस पर्टिकुलर सीम में धोरी कॉलरी अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर सीम में एक्सप्लोजन हुआ था वो सीम को उसी टाइम से सील कर दिया गया है, तो दैट सीम इज नॉट वर्किंग। द सीम नेम इज बर्मो सीम। ठीक है, बर्मो सीम धोरी कॉलरी में एक्सीडेंट हुआ था। धोरी कॉलरी में कारो सीम में वर्किंग चल रहा है अंडरग्राउंड में, बट बर्मो सीम को क्या है, क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो अभी तक का जो 1900 से लेकर अभी तक जो माइन एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट का पाई चार्ट है, ये वाला नंबर ऑफ कैजुअलिटी का पाई चार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मोस्टली फायर डैम्प एक्सप्लोजन ज़्यादा हुआ है। 66% जो एक्सप्लोजन है, 39 टोटल 39 एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें 66% एक्सप्लोजन जो है फायर डैम्प एक्सप्लोजन है, जो मीथेन गैस के कारण हुआ है। ओनली 7.69% is occurred due to what? Coal dust explosion. And 25.64% of explosion is occurred due to mixed combination of coal dust and fire damp explosion. Now, here we can see the here 66 here coal dust explosion is only 7.69%, but द कैजुअलिटी मीन्स जो पर्सन उसमें डेड हुआ उसका परसेंटेज है 26.94%, मतलब अराउंड 27%। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द डेडलीस्ट, मतलब वन ऑफ द डेंजरस एक्सप्लोजन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 7% जो नंबर ऑफ एक्सप्लोजन हुए हैं उसमें इतना परसेंटेज टोटल जो कैजुअलिटी हुआ है उसमें इतना परसेंटेज कैजुअलिटी हुआ है। जबकि यहाँ पे देख सकते हो मीथेन गैस का 66%, 66-67% जो एक्सप्लोजन हुआ है उसमें ओनली 40%, 41.58% लोगों का कैजुअलिटी हुआ है। और यहाँ पे जो मिक्स्ड एक्सप्लोजन है उसमें 25% एक्सप्लोजन में 31.48% का कैजुअलिटी हुआ है। तो दीज आर द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिकेड वाइज। यदि हम लोग कोल डस्ट एक्सप्लोजन को उसके हिस्ट्री पे जाएं कि कब कब कितना हुआ है, तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है नंबर है, मतलब एक एक डिकेड 10-10 साल का डिकेड होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कब कब कितना कितना एक्सप्लोजन हुआ है। जो ये ग्रीन कलर है वो दिख रहा है कोल डस्ट एक्सप्लोजन विथ मीथेन, मतलब ये मिक्सर है। रेड वाला कोल डस्ट एक्सप्लोजन है, ब्लू वाला मीथेन गैस एक्सप्लोजन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन 2-3 बार ही हुआ है। जो बेसिकली ये 1931 से 40 के बीच में एक कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था। 1961 से 70 के बीच में कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि धोरी माइन में अभी डिस्कस किए, जिसमें 268 लोग मारे गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट कोल डस्ट एक्सप्लोजन जो हुआ है अंजन हिल माइंस में हुआ है, जो कि ACCL में चिरमिरी एरिया में है। ठीक है, तो ये 3 कोल डस्ट एक्सप्लोजन ही अकर्ड हुआ है। बाकी मीथेन गैस एक्सप्लोजन नंबर देख सकते हो कौन कौन से साल में। यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजन नंबर ऑफ एक्सप्लोजन हुआ है देख रहे हैं 1921 से 1930 में 6 एक्सप्लोजन, 1931 से 1940 में 3 एक्सप्लोजन, और 1941 इसमें लगभग बाकी में 4-4 एक्सप्लोजन हुआ है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में और इस पर्टिकुलर पॉइंट में।
अब ये है डिकेड वाइज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कौन से साल में हुआ है। तो इस साल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सप्लोजन भी हुआ है 31 से 40 में। ये पर्टिकुलर पॉइंट में इसमें देखो तीनों टाइप का एक्सप्लोजन हुआ है। मीथेन गैस भी हुआ है, कोल डस्ट भी हुआ है, मिक्सचर भी हुआ है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, 3 मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन उसमें 3 मीथेन गैस एक्सप्लोजन में ओनली 13 लोग मारे गए हैं। एक कोल डस्ट एक्सप्लोजन में 62 लोग मारे गए हैं, और 2 जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ है उसमें 228 लोगों का कैजुअलिटीज हुआ है। ठीक है। वैसे सेकंड लार्जेस्ट जो है इस पर्टिकुलर एक ही एक्सप्लोजन हुआ है 1968 से 268 में, जिसमें 268 सॉरी 1965 में, जिसमें 268 लोग मारे गए थे। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कैजुअलिटी इस डिकेड में हुआ था, जबकि यहाँ पे सिंगल एक्सप्लोजन हुआ है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन। सो दीज आर द history of coal dust explosion that is occurred in Indian mines, that is decade wise analysis we can say। और वैसी ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट और कैजुअलिटी स्टेट वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन कौन से स्टेट में हुआ है, या सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन में कौन से, मतलब ये याद रखने वाली चीज़ है बेसिकली। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन जो नंबर हुआ है वो हम लोग देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल में कितना एक्सप्लोजन हुआ है, 14 + 3 मतलब 17। और वहीं झारखंड में कितना एक्सप्लोजन हुआ है, 4 2 6 5 11 एक्सप्लोजन। असम में 5 एक्सप्लोजन, बाकी छत्तीसगढ़ में एक, जम्मू एंड कश्मीर में एक, मध्य प्रदेश में एक, बलूचिस्तान में एक, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक, टोटल। अच्छा हम लोग जो ओके, और इसमें कैजुअलिटीज देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज, मतलब एक्सप्लोजन तो बहुत जगह हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग लगभग इस ओवरऑल 120 साल में लगभग लगभग 2 से 3 हज़ार लोग मारे गए। उसमें मोस्टली तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में ही है। नंबर ऑफ एक्सप्लोजन भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कैजुअलिटीज देखो कितना है, टोटल 355 प्लस 226, 83 प्लस 330 प्लस, मतलब सबसे ज़्यादा ये दोनों प्लेस पे एक्सप्लोज नंबर ऑफ एक्सप्लोजन मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली यही हुआ है। छत्तीसगढ़ में ओनली जो लास्ट एक्सप्लोजन हुआ था अंजल हिल माइन में, उसमें 14 लोग मारे गए थे। इसमें एक जनरल मैनेजर जो कि माउंट माइन के माउथ पे खड़ा था, वो भी एक्सप्लोजन जब हुआ और जो फ्लेम और जो शॉक वेव ब्लास्ट वेव कम आउट हुआ, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन में एक जनरल मैनेजर, एरिया जनरल मैनेजर भी इसमें मारा गया था। पर्टिकुलर मारा गया था, मतलब कैजुअलिटीज हुआ था, डेड हो गया था। तो ये छत्तीसगढ़ में एक ही एक्सप्लोजन हुआ है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ में जो एक्सप्लोजन हुआ है क्यों हुआ है। वेस्ट बंगाल, असम में 39 एक्सप्लोजन हुआ है, 39 कैजुअलिटीज हुआ है ड्यू टू फायर डैम, एंड 9 कैजुअलिटी मिक्सचर एक्सप्लोजन के कारण। और इसमें देख सकते हैं झारखंड में नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितने हैं। आंध्र प्रदेश में ओनली 7 कैजुअलिटीज, जम्मू एंड कश्मीर में 10 कैजुअलिटीज, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो हम लोग जो एक्सप्लोजन का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो हम लोग 39 एक्सप्लोजन जो एनालिसिस कर रहे हैं पिछले 120 साल का, इसमें 2 एक्सप्लोजन जो हुआ है वो बलूचिस्तान में हुआ है। ठीक है, बलूचिस्तान इज नाउ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 1947 के पहले उसमें एक्सप्लोजन हुआ है, तब वो दैट बलूचिस्तान इज कम्स अंडर इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1947 में जो पार्टीशन हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, लेकिन एनालिसिस में उसके पहले जो इंडिया में आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसमें बलूचिस्तान को भी ऐड किया है। तो एक्सप्लोजन बलूचिस्तान में हुआ है। ठीक है, एंड दैट
due to this explosion occurred in Balochistan, 33 people were dead. Now, these are the uh, analysis number of accidents ड्यू टू बिफोर इंडिपेंडेंस देख सकते हैं। जैसे हम लोग 120 साल का एनालिसिस इसमें किए हैं, 120 साल का हिस्ट्री मतलब 1900 से लेके अब तक देख रहे हैं। तो ये बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस 1900 से बिफोर इंडिपेंडेंस कितना एक्सप्लोजन हुआ है और कितना कैजुअलिटीज हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कितना हुआ है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस 61% एक्सप्लोजन जो हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि 1900 से 1947 के बीच में 61% एक्सप्लोजन हुआ है, जबकि 1947 के बाद अब तक ओनली 38% हुआ है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद थोड़ा सा माइन के सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ गए। जैसे बहुत सारे 5 ईयर प्लान इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आए, माइन एक्ट आया, माइन रूल्स आए, कोल माइन रेगुलेशन आया, सेफ्टी के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस किया गया। ये बहुत सारे रीजन के कारण एक्सप्लोजन जो है आज़ादी के बाद कम होते गया। उसके पहले तो बस इन लोगों का ये था कि कोल एक्सट्रैक्ट करना है। पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे आता था, तो उनको लोगों को मतलब वर्कर्स को बेसिकली इंडियन होते थे उन लोग, तो अ, क्या होता था, उन लोगों को कोल एक्सट्रैक्ट करना था, तो उन लोग उतना सेफ्टी का केयर नहीं कर रहे थे पर्टिकुलर। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आए जिससे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। और यहाँ पे एक एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं कि कितने कैजुअलिटीज हुआ उसमें भी। प्री इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले कम था, इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़्यादा नंबर इसलिए दिख रहा है। हालांकि नंबर ऑफ एक्सप्लोजन कम हुआ है, लेकिन कैजुअलिटीज ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि जो 1965 में धोरी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 268 लोग मारे गए थे, और उसके पहले 1956 में जो एक चीनापुरी माइन में जो एक्सीडेंट हुआ था, मिथेन गैस एक्सप्लोजन, उसमें 176 लोग डेड हो गए थे। इसलिए ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला कैजुअलिटी में नंबर जो है, नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। और ये वाला जो एनालिसिस है नीचे में, बेस्ड ऑन नेशनलाइजेशन, अब बिफोर नेशनलाइजेशन एंड आफ्टर नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल जो है, नेशनलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों किया गया? नेशनलाइजेशन बहुत सारे रीज़न के कारण किया गया। जो पहले आउटसोर्सिंग कंपनीज था, जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज था, वो तो एक तो कोल को रेशनल मैनर पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था, उन लोग अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। और दूसरा, कोकिंग कोल को ठीक से रेशनल सिस्टमेटिक एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहा था, बहुत सारे डिमांड को फोरकास्ट को मीट नहीं कर पा रहा था। और जो उन लोगों का डिस्पाइट मतलब बहुत सारे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहे थे जो भी कंपनीज को ड्यू टू दिस माइंस, उसके बाद भी उन लोग सेफ्टी में खर्च नहीं कर रहे थे। मतलब उन लोगों को बस अपने फायदा का था, उन लोग सेफ्टी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि वर्कर्स के जो वेजेस हैं उसको ठीक से नहीं दे रहा है, या कंपनसेशन है उसको ठीक से नहीं दे रहा है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1971 में डिसीजन लिया कि अब जो भी कोल कंपनीज है उसका नेशनलाइजेशन करना है। तो 1972 में, अप्रैल 1972 में नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे माइंस को 1972 में नेशनलाइजेशन करना शुरू किया। उसके बाद 1973 में बाकी जो कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल को पूरा नेशनलाइजेशन को 2 चरण में कंप्लीट किया गया। पहला कोकिंग कोल और दूसरा नॉन कोकिंग कोल, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 1972 से 73 तक नेशनलाइजेशन का प्रोसेस किया गया।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्सप्लोजन है, 74% जो एक्सप्लोजन है वो तो बिफोर नेशनलाइजेशन हुआ है। मतलब कोल के नेशनलाइजेशन के पहले जितना एक्सप्लोजन हुआ है 39 में, लगभग लगभग 75% एक्सप्लोजन नेशनलाइजेशन के पहले हुआ है, जबकि मात्र 25% एक्सप्लोजन जो है नेशनलाइजेशन के बाद हुआ है। वही नंबर ऑफ कैजुअलिटी का डाटा आप लोग देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं, 83%, 84% जो लोग कैजुअलिटीज हुई है वो बिफोर नेशनलाइजेशन हुआ है। ओनली 16% कैजुअलिटीज आर अकर्ड आफ्टर नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया बिफोर इंडिपेंडेंस के बेसिस पे और नेशनलाइजेशन के बेसिस पे। एंड दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन इग्निशन सोर्सेस। कौन कौन सा इग्निशन सोर्सेस से कौन कौन सा जो एक्सप्लोजन जो है इनिशिएट हुआ है। तो बेसिकली हम लोग इग्निशन सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, कौन कौन सा है। ओपन फ्लेम, डायरेक्ट हीट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क, फ्रिक्शनल स्पार्क, सेल्फ हीटिंग, लुमिनस स्पार्क, ब्लास्टिंग ऑपरेशन एंड अननोन सोर्सेज। ब्लास्टिंग ऑपरेशन से भी बहुत सारे स्पार्क जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, 39 में कितना कितना एक्सीडेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 28% ऑफ एक्सप्लोजन इज अकर्ड ड्यू टू luminous spark and open light. मतलब we can say this luminous spark is one of the most prominent ignition sources. From here we can see 53% casualties is occurred due to this uh, ignition sources only. luminous spark मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब अवेयरनेस नहीं होता था, लोग लाइट के लिए ओपन लैंप लेके चले जाते थे, हेरिकन लेटन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कंडील या फिर लैंप बोलते हैं। हेरिकन लेटन जो मैं जो बता रहा था, धोरी माइन जो इंडिया का सबसे वर्स्ट एक्सप्लोजन है, डिजास्ट्रस एक्सप्लोजन है, वो कैसे इग्नाइट हुआ है। वर्कर जो है लाइट के लिए हेरिकन लेटन जिसको बोलते हैं कंडील या फिर लैंप लेके अंडरग्राउंड माइंस में गया था, और उसका वहां से फिर ये क्या है, स्पार्क कर गया। जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन का क्लाउड है वो क्या है, वहां से उसको इग्निशन सोर्स मिल गया और एक्सप्लोजन हो गया, और 268 लोग वहां पे मारे गए। और बहुत सारे डिफेक्टिव सेफ्टी लेंस आते हैं इस पर्टिकुलर इग्निशन सोर्सेस में, जैसे डिफेक्टिव सेफ्टी लेंस के कारण भी बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए हैं। तो these are the different ignition sources that is occurred in underground mines. Now we can see other ignition sources. This is 23.08% of explosion are unknown, occurred due to unknown explosion, unknown source of ignition। जैसे बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं जिसके कहाँ से इग्नाइट हुआ, कौन सा सोर्स ऑफ इग्निशन है वो पता नहीं चलता, तो 23% का पता नहीं। बाकी 12% है वो सेल्फ हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है और वहां से इग्नाइट कर गया। जैसे लास्ट एक्सप्लोजन जो हम लोग बोल रहे हैं अंजन हिल माइंस में हुआ था, वो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस कंबशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वहीं से वो एक्सप्लोजन जो है इनिशिएट हुआ था। ठीक है, अदर वी कैन से 12% जो एक्सप्लोजन है इलेक्ट्रिकल स्पार्क से हुआ है, 10% जो है ओपन फ्लेम से हुआ है, 5% के आसपास फ्रिक्शनल स्पार्क से हुआ है। ठीक है, कैजुअलिटी में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज इज अकर ड्यू टू लिमिटलेस स्पार्क ओनली। 15% हुआ है ओपन फ्लेम या डायरेक्ट हीट के कारण। So these are the all distribution, and we are these things we are you you need to know about this history of explosion कि हम लोगों के एक्सप्लोजन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, कब कब कितने कितने लोग मारे गए हैं, या मारे गए नहीं बोल सकते, कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई है या क्या जो भी हुआ है। So these are the factor affecting coal dust explosion.
Okay, so here I will give the because we don't have much time to explain all those things. So we I am just introducing these things, and we will discuss all those things in later next class in detail. So different factors that affects the particle size. Factor affecting cold dust explosion is one. First is particle size, and how particle size is affected the explosion process. We will discuss in detail in later class, next class. Dust concentration, how affect when the concentration of dust is. Because I think the next class is scheduled from 8 o'clock. So we will just introduce all those things. Thereafter, we will discuss in detail in next class. So particle size, smaller particle are um, uh, we can say uh, more severe severity or high susceptibility. डस्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एक्सप्लोजन का चांसेस ज़्यादा होगा। डाटा के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत सारे और फैक्टर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर कंटेंट, percentage of face and incombustible content, nature and intensity of ignition sources, percentage of fire damp and linear rank of coal, laboratory tests to determine the explosion characteristics of coal dust, and then there is different laboratory test chamber. Okay, so these are the 20-liter explosion chamber. From here we can determine uh, explosion severity, explosion pressure, rate of pressure rise, and explosivity index. These are PG furnace and Hartmann tube. From here we can determine the explosion characteristics of coal dust from all those things. It is instrument, and you need to know about the explosion characteristics. What are the explosion characteristics in underground coal mines? So these are the instrument. We will discuss in detail about this instrument because this is important in कोल डस्ट एक्सप्लोजन। हम लोग क्या क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन: मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम इग्निशन एनर्जी, मिनिमम एक्सप्लोजन कंसंट्रेशन, limiting oxidant concentration, maximum explosion pressure, and maximum rate of pressure rise. So these are prevention method. So these things we will discuss. All these things we will discuss in later classes because I think from few minutes later next class is scheduled, and all those things we have to explain in better way. So we need some times due to because we need some times for better understanding of factors and characteristics and their suppression and prevention. These three topics are uh, we will elaborate in next class so that better understanding of mechanism, characteristics, factors, and prevention and suppression. So, thank you for attending classes, and please give feedbacks in chat. This class is understandable or not, or useful or not for your examination or for things what you are preparing for. Thank you.